Greeting to all, and we appreciate your attendance today. So let's kick a start our session with this great quotation. Opportunity does not knock; it presents itself when you beat down the door. A very good afternoon to all the guests and dignitaries. It is in this capacity as your host for the worldwide webinar on successful job interviews. I, Shushmita Kar, would like to take this opportunity to extend a hearty greeting to each and every one of you. It gives me a great pleasure to extend a warm hello to each and every one of you gathered here today. It is a huge honor for us to have someone of this caliber there, whose involvement on the topic of successful job interview adds so much value to it. A successful job interview is a key to advancing in your career. It starts with a thorough preparation, such as understanding the company's background and the specifics of the role you are applying for. During the interview, clear and confident communication, along with a professional demeanor, helps you effectively convey your skills and experience. Engaging actively with the interview and expressing genuine interest in the position further enhance your chance of making a memorable impression and securing the job. Before I proceed further, let me take a brief moment for the introduction of my organization. SEMS Welfare Foundation, a registered non-profit organization, is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiative, Digit Saksham, we have created training program in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting on 6,000 individuals. We currently upskilling intimate in Haryana jails and collaborating with universities and colleges. We all have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in job. Family other SEMS initiatives empowers women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. We could program on digital literacy, marketing, and career development, reaching our reaching over 1,000 women across multiple states. The initiatives recently reached a milestone of 100 women actively involved. In just a short time, SEMS has established as a force for positive change, equipping individuals with skill for employment and promoting women's leadership in various industries. Now, let me take this wonderful occasion to publicity present and welcome Roli Verma, the keynote speaker for this today's international webinar. Roli Verma is a highly respected career coach and speaker known for her expertise in job interview and professional development. She is recognized for her ability to provide actionable advice that helps individuals enhance their interview skills, build confidence, and achieve career success. Verma insight and guidance are valued for their practical application and effectiveness in navigating the job market. There are many gems and diamonds in the world, and one of them is here today to help us build this event. With this note, I, Shushmita Kar, on behalf of SEMS Welfare Foundation, would like to give my heartiest welcome to Roli Verma ma'am with a huge round of applause for joining us today. Your presence has added to the significance of this event. We are genuinely honored to have you, ma'am. Thank you so much, and thank you for inviting me at this podium to share my insights with respect to successful job interview. See, today's world is full of jobs, opportunities, internships, so on and so forth. We think that today's world does not have ample opportunities with respect to job, internship, volunteership, so on and so forth. This is our myth. We will break this myth today with a few facts. I run my own YouTube channel whereby I foster and mentor students, working professionals, senior managers, founders as well, to help them understand the industry standard. I receive multiple
queries, a lovely audience like you, whereby I have received a lot of questions to be addressed. That? What is a trick to crack an interview? We speak a lot, we talk a lot, however, we do not have that with us. Hence, let's talk about tips tricks and what we can do in order to crack interview. देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आए दिन हम बातें करते हैं और हम बहुत सोचते हैं रोते रहते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है अपॉर्चुनिटीज नहीं है हम क्या करें बहुत कुछ कर चुके हैं हार चुके हैं थक के बैठ गए हैं समझ में नहीं आ रहा है सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या जब भी कोई इंटरव्यू का कॉल आपके पास आता है जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझते हैं पढ़ते हैं प्रिपरेशन करते हैं रिहर्सल्स करते हैं प्रैक्टिस करते हैं या नहीं ज्यादा से ज्यादा जब कैंडिडेट से मैं बात करती हूँ रेस्पेक्टिव ऑफ दी हयाती लेवल चाहे वो एक स्टूडेंट है चाहे वो कॉलेज गोअर है चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है मुझे यही पता चलता है कि नहीं हमें नहीं पता किस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमें कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए वी नीड समवन टू प्रैक्टिस वी नीड समवन टू टॉक हाउ कैन वी गेट टू नो ourselves if we talk to ourselves with a mirror in front of us that yes, we are confident to face an interview? My answer to this question is yes, you can definitely practice solely without requiring or without a companion. How come? Going forward, if you're preparing for an interview, please practice in a way till the time you hear a confident tone. Believe me, if your tone is not confident, if you have not rehearsed or practiced multiple times, did you till you hear a confident tone of yourself, you are still not prepared for the interview. Doesn't matter, even your companion or someone who is observing you practicing for the interview says that yes, you are fully fit to go and appear in the interview. The first thing is your tone. Your tone matters a lot. If you do not have a confident tone to face the interview, nothing will happen. No wonder, no mystery will be unraveled during the interview, which will save you. To be select. Second, try to use your hand while you talk in the interview. Going forward, please, I request you to use your hand gestures frequently in order to express what you want to convey to the interviewer. Researchers have already proved this fact. 90% of the successful candidates are successful just because they are using hand gestures expressively during the course of the interview. Good. Please be prepared and rehearse prior to the interview for each and every expected and unexpected question as well, which can be put across to you in the interview. Prepare respective examples to the questions. There would be some unexpected questions as well. Prepare yourself that if certain unexpected questions will be asked to me all of a sudden in the interview, how am I going to respond to those questions? And for each and every question to be answered, prepare it in a way as if you're explaining how have you dealt a specific situation related to this question in the past, and that too lately. If you're citing an example of dealing a situation in the past, it shouldn't be in a gap of more than 1 year. कहने का मतलब ये है कि जो भी सवालों को आप प्रिपेयर कर रहे हैं आगे आने वाले इंटरव्यूज में उनके जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं तो जवाबों को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हर सवाल के जवाब में आप कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर इंटीग्रेट करें फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो जॉब इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि how would you handle multiple projects, how would you handle a pressurized or maybe multiple projects at one point in time. तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपको अभी हाल ही में जो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई ऐसा वॉलंटियरशिप कोई इंटर्नशिप या कोई प्रोजेक्ट वर्क हैंडल किया है या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपके कॉलेज लाइफ का हो सकता है आपके ऑफिस का हो सकता है जिसमें आपको भले पैसे नहीं मिले हो उस काम को करने से लेकिन वो एक एग्जाम्पल है सिचुएशन जो एकदम बहुत अच्छी तरीके से फिटन होता है जहाँ आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है मल्टीपल चीजों पे आप काम कर रहे थे और किस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज करके कौन सी एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी एक्टिविटी से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है
किस तरह से उसे शेड्यूल करके आपने काम रहते हुए, बिना टेंशन में, बिना स्ट्रेस में आए हुए उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। तो हर सवाल का एक तो एग्जाम्पल आपके पास रेडी होना ही चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि इंटरव्यूज में जाएंगे एंड if we will be asked certain questions, we will just answer in a way that we will not integrate examples from our past life. No, then it will never ever help you to crack the interviews. Please prepare examples for each and every questions to be asked in the interview. And these examples can be just not the ones where you have been paid for something to do. It could be from your family life as well. Please remember this fact. Next, very, very common question that we don't know how to start off the interview. I give you a tip and I challenge you, if you follow this tip, you will definitely crack interviews. Doesn't matter how difficult it is. Please read the location of the interview before time. Please reach the location of the interview before time. If it's a virtual interview, log in before time. If it's a virtual interview, log in before time. This will help you and this will build an impression before the interviewer as if you're more than interested in that respective job opportunity. Believe me, this has happened with me as well in the past. Henceforth, I'm sharing a few real life examples of what has have happened with me in the past and as well with my candidates and people whom I have mentored for the past so many years. अगर आप जल्दी से जल्दी अपने इंटरव्यू के लोकेशन पे जाके पहुंचेंगे, इंटरव्यू को एक रिफ्लेक्शन देंगे कि हाँ आप इस जॉब में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसी वजह से आप वहां बिफोर टाइम आके पहुंचे हैं। अगर वर्चुअल इंटरव्यूज हैं तो भी लॉग इन आप तकरीबन तकरीबन 10-15 मिनट पहले करके बैठ, which gives an impression to the interviewer that yes, you are more than interested to be in that job. बहुत चीजें होती हैं जो आप शब्दों से ना कह के अपने एक्शन से जता सकते हैं इंटरव्यूअर्स को, and more so you can impress them even before the interview gets started. And these are some of the tricks जो मैंने फॉलो की हैं, मेरे में जितने भी जिन्होंने मुझे मेंटोर किया है उन्होंने फॉलो की हैं, और जिनको मैं मेंटोर कर चुकी हूँ उन्होंने भी फॉलो की हैं। उसके बाद एक और फैक्ट, हम सभी को पता होता है कि हमारे इंटरव्यूअर्स जनरली कौन है, उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन हमें तकरीबन तकरीबन 2-3 दिन पहले, अगर एक हफ्ता पहले भी नहीं तो पता चल जाती है। ईमेल्स आती हैं हमें that who will be conducting this interview and what will be the designation of that respective person. So how do you prepare? My question is, for that respective interview, you just prepare and you just stick by to answer the questions which will be asked by the interviewer, or do you have certain questions to be asked to the interviewer as well? या हमने आज से पहले, इस वेबिनार से पहले ये सोचा है कि ठीक है इंटरव्यूअर तो हमसे बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन क्या मैं भी किसी तरीके से इंटरव्यूअर से रपो बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जैसे ही इंटरव्यू शुरू हो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा लास्टिंग इम्प्रेशन इंटरव्यूअर की आंखों में बन जाए, और बस I will be selected over other candidates. What extra can I do? Do I know this fact? Or do I know something or the other, which definitely if I do, I will be selected. I will be given preference in that respective interview. इसका जवाब है हाँ, आप एक चीज तो जरूर कर सकते हैं इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। क्या? जैसे ही आपके पास ईमेल आता है, मैसेज आता है कि ये आपके इंटरव्यूअर होने वाले हैं, ये डेजिग्नेशन है, जाइए उनको लिंक्डइन पे सर्च करिए, उनके बारे में पढ़िए, देखिए वो किस तरीके की पोस्ट आर्टिकल आए दिन डालते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। ये सब देखने के बाद prepare your own sweet answers and questions to be asked to the interviewer before the interview starts. और ये सब आपको इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही करना है उनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि फर्स्ट impression is counted as the last impression. We have a saying and we believe in the saying as well. Why do we say that first impression is the last impression? क्योंकि पहले 6 सेकंड या 8 सेकंड में जो आप इंप्रेशन अपना किसी के भी ऊपर बना लेते हैं वही काम करता है। और interviewers are social and human beings as well. And if I talk about psychology, human psychology works in a way whereby if you have this art of impressing someone in the first 6 seconds, and if you can use the start to impress the interviewers during the course of the interview, nothing like it. The work is done. You will be selected for sure. Why? Because interviewers are looking for the candidates who have common interests with them. And how would you identify whether or not you befit that frame of common interest with the interviewer? Once you read about them,
once you try to know more and more about them by going through their LinkedIn profile, what they write, what they share, and talk about it. For example, your interviewer's name is, this is hypothetically, let it be Graham Smith. You will say, Mr. Smith, I read your LinkedIn post about technology, which you posted the day before yesterday, and I was so impressed with it. Why? Because I have a passion. I too post a lot of articles basis technology these days. I found it engaging. It is really wonderful to share an update like what you share on a daily basis. And of course, apart from this as well, I know you all are very creative and you can make your own innovative statements to win the hearts of the interviewers. So do it. Why not are we doing this? And then we ask questions that we do not know the areas of opportunity or gaps whereby we could have built rapport with the interviewers. Nobody had ever told us. We thought that they will ask us questions, so questions will be thrown at us and we will answer those questions. हमें सिर्फ इतना ही पता था. हमें नहीं पता था, किसी ने बताया भी नहीं कि हम खुद इंटरव्यूअर के साथ रपो बिल्डिंग कर सकते हैं और कैसे. जी हाँ, इसी तरीके से उनके बारे में पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लिंक्डइन पे और उनकी पोस्ट के बारे में जाके बात छेड़िए, क्योंकि इंटरव्यूअर्स को भी कोई ना कोई ऐसा ही बंदा चाहिए जो उनसे ज्यादा से ज्यादा सिंक इन करता हो, जो उनके जैसा हो. हम ह्यूमंस को भी वही पसंद आता है जनरल लाइफ में भी, जो हमारी तरह हो, हमारी तरह बातें करता हो, हमारी तरह उसके कॉमन इंटरेस्ट हो, उसी को हम दोस्ती बनाते हैं. तो इंटरव्यूअर भी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, उनकी साइकोलॉजी भी इसी तरीके से काम करती है. दे आर लुकिंग इवन फॉर the ones who are very much like them, and they will definitely will have a soft corner for you, and you will be selected for sure. क्योंकि सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना है, सबसे पहले बातों से दिल जीतना है, उसके बाद इंटरव्यूअर के जितने भी सवाल जवाब है आप उनके जवाब देना शुरू करेंगे. बिजनेस डीलिंग तो होती रहेगी. नेक्स्ट, आप मैं थोड़े से कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूंगी, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क बताऊंगी, जिस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट जॉब इंटरव्यूज इनटू सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू. व्हाट आर द स्टेप्स? हाउ कैन वी स्टार्ट preparation for the interview? Pehla step. First step should be, we all need to research vision, mission, values of the respective company. जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लेते हैं, वी हैव एन इंटरव्यू और वी नीड टू अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर IBM, फॉर एग्जाम्पल. तो IBM एज अ कंपनी के विजन मिशन के बारे में आप पढ़ेंगे. विजन अलग होता है, मिशन स्टेटमेंट अलग होता है. उनके वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, उनके फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन अकाउंट्स पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे IBM की, देखेंगे वो किस तरह से, क्या उनकी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब कंपनी के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, अलग अलग सोशल मीडिया साइट पे विजिट कर लिया, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स भी पता कर लिए, सेकंड स्टेप में जो भी आपकी HR है, जिसके भी साथ आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके बारे में रिसर्च करें. इस HR के क्या इंटरेस्ट हैं, इन्होंने ये किस तरह के ये लेटेस्ट आर्टिकल्स शेयर करते रहते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव है नहीं है, और अगर नहीं भी है तो लास्ट पोस्ट इन्होंने क्या डाली है, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ तो एक इनिशिएटिंग ट्रिगर पॉइंट हो टू बिल्ड rapport with the interviewer. And this has to be done in the first 6 or 8 seconds once you say hi to the interviewer before the interview gets started. ये रपो बिल्डिंग तभी काम आएगी HR के साथ. तो पहले हमने कंपनी का विजन मिशन वैल्यूज समझ लिए. दूसरा, हमने HR का विजन मिशन, जो भी उसके कॉमन इंटरेस्ट है, वो सब रिसर्च कर लिए. तीसरा, हमें कंपनी के गोल्स को समझना होगा और हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से, हाउ कैन आई contribute to company's गोल और कंपनीज विजन. ठीक है, अब मैं कंपनी के गोल जान चुका हूँ, HR को भी समझ चुका हूँ. तीसरे में, अब मैंने कंपनी के गोल जान के करूंगा क्या, मुझे ये देखना है कि मेरा मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और मैं उसे किस तरीके से शब्दों में बोलूंगा, फिर के आगे इंटरव्यू में रखूंगा इंटरव्यूअर के सामने कि दिस इज हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंपनीज गोल, हेंस आई befit this job designation, select me. Of course you will not say to the interviewer that select me, I befit. This is how you will prove that this is how I can contribute to your company's vision, mission, or objective. And this can only be done if you know about vision, mission, and objectives of the respective company for which you will appear in the interview. Third step is done. Now you know how to create your own answers whereby you will prove that I am the one who will contribute to the company's goals. Then coming and moving ahead to fourth step, whereby you need to match your strengths with your skill, your passion, your strength, you need to match it.
with the job description of that respective job. That this is my strength and these are the qualifications or eligibility criteria which you need for this respective job I fit in. Why? Because my strength, my passion is in sync with job description. You need to create a statement whereby you need to prove to the interviewer that because my strength is this, I've done this much till now, this is my experience, this is my education. Hence, these are the things which are there in the job role as well. This is how you will prove. You will tell them that this is what is my strategy whereby I will fulfill the KRAs and KPIs of this respective job. I will overcome all the challenges of this job with my strength, with my skills in this way to achieve company's vision, mission, and value. You need to tell the interviewer how much value, if you will be selected in this job interview, will add to the job. So think about these points and start building or creating your own sweet answer. You need to prove it to the interviewer that how significant are you to be selected in that respective job, or how significant you will be once you will be selected for the respective job to fulfill company's future goals as well. Could be long-term goals, could be short-term goals, why not? So on and so forth. Please remember, we need to be prepared for these respective answers, for these respective questions. और सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि जो जिस भी जॉब इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो, पहली बात तो हर एक कंपनी का इंटरव्यू अलग होता है. हमें एक कंपनी, जैसे अगर आप आईबीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से इन्फोसिस के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है या टाटा के लिए, जी नहीं. आईबीएम के लिए एक अलग तरीके से प्रिपरेशन होगी, इन्फोसिस के लिए एक अलग तरीके से और टाटा के लिए एक अलग तरीके से. कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. इस तरीके से हमारा रिज्यूमे हर जॉब के लिए अलग बनता है. क्यों? क्योंकि हर कंपनी के मिशन, विजन, वैल्यूज और जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है. तो जाहिर सी बात है, एक रेज्यूमे, एक सीवी आप सारी जॉब, सारी इंटर्नशिप्स के लिए नहीं चला सकते हैं. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ज्यादातर मेरे पास सवाल आते हैं कि हम एक ही रेज्यूमे, और मुझे पता है 90% ऑफ us when we do not get selected or even our resumes or CVs not getting selected or filtered out, I get constant or continuous questions pertaining to the fact that, ma'am, we are not even getting called for the interviews. Why? Could you please help us? And the reason is कि आप लोगों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, आपके सीवीज, रेज्यूमेस फिल्टर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एक ही जेनेरिक रेज्यूमे बना के, सीवी बना के अप्लाई करते चले जा रहे हैं. हमें ये समझना होगा कि हर कंपनी के लिए एक अलग से रेज्यूमे बनेगा, स्पेसिफिक टू दैट कंपनी, स्पेसिफिक टू दैट जॉब रोल. कैसे? जिस भी जॉब के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर. अब इस जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, देखिए किस कंपनी की ये जॉब है. इस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है. एज अ ट्रेनर इस कंपनी को क्या क्या चाहिए. मान लीजिए कंपनी को चाहिए कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन, you need to be very good in phonetics, you need to be very 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 good with respect to sounds, pronunciation, grammar. तो ये सारे की पॉइंट्स आप जेडी से उठाएंगे और अपने रेज्यूमे में डालेंगे. ये सारे कीवर्ड्स हो गए आपके लिए. अगर आप ये सारे कीवर्ड्स उठा के अपने रेज्यूमे में इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कंपनी जब भी आपके सॉफ्टवेयर से आपका रेज्यूमे या सीवी फिल्टर करने की कोशिश करेगी, कीवर्ड्स मैच नहीं होंगे और आप इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाए. तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, द व्यूअर्स, the audience today who are listening to this respective webinar, पहला चरण यही है कि सबसे पहले तो आप वो इंटरव्यू में बुलाया जाए, उसके बाद ही आप बाकी कुछ कर पाएंगे, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया. इंटरव्यू में आपको कैसे बुलाया जाएगा? रेज्यूमे ठीक से बनाइए. जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर 100 या 20 कीवर्ड्स हैं जिसमें बोला है कि आपको एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स उठाइए और उसको रेज्यूमे में पेस्ट कर. अगर बोला है कि यू नीड टू बी वेरी गुड इन फेनेटिक्स, साउंड, तो फेनेटिक्स उठाइए उस कीवर्ड को जेडी से और अपने रेज्यूमे में इंटीग्रेट कर दीजिए, लिख दीजिए. अगर 20 कीवर्ड्स हैं, 20 चीजें कंपनीज को एज अ स्किल चाहिए आपने, तो वो सारी की सारी स्किल्स उठाइए, पूरा जेडी उठा के कॉपी, उसकी कीवर्ड कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने रेज्यूमे में. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको इंटरव्यू कॉल धड़ाधड़ आने शुरू हो जाए. और जब ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन की, कंपेयर टू अदर कैंडिडेट. फॉलो दिस ट्रिक. नेक्स्ट, अब मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स
आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, या फ्रेजेस जिसके थ्रू आपको इंटरव्यू में बैठे बैठे ही पता लग जाएगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और बार बार रिक्रूटर या इंटरव्यूअर आपसे इस तरह से कुछ बातें करना शुरू कर रहा है, whereby he or she says, I love your experience. What you have done. Beautiful. Amazing. अगर इतने अच्छे अच्छे शब्द इंटरव्यूअर आपसे बोल रहा है तो समझ लीजिए कि वो एक तरीके से जता रहा है that he or she is impressed with the way you have had a conversational interaction with him or her today. एक इंडिकेशन है आपके लिए, लेकिन कभी भी सिर्फ इस बात से मत सोच लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है। इट इज अ सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू अगर आपको एक इंडिकेटर मिल रहा है। सिर्फ हमेशा और हमेशा एटलीस्ट 3 इंडिकेटर्स को देखिए। मैनेजमेंट का रूल है, अगर आप में से काफी लोग दर्शक होंगे जो आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट किया है, दे मस्ट बी नोइंग दैट एटलीस्ट ट्राइस अगर हमें ऐसे कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं, देन ऑफ कोर्स वी कैन वाउच फॉर दैट यस we have been selected for the respective interview. तो एटलीस्ट 3 साइंस ऐसे देखिए इंटरव्यू में, जो इंटरव्यूअर आपको दे रहा है या रिक्रूटर दे रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं और आप समझ भी जाएंगे आराम से खुद ही, बिना किसी से पूछे और डिस्कस करे कि वेदर और नॉट यू हैव बीन सिलेक्ट। अगर इंटरव्यूअर ज्यादा से ज्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, बोल रहा है आई लव योर एक्सपीरियंस, इट लुक्स लाइक दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया, या फिर कुछ ऐसे शब्द या सेंटेंसेस, व्हाट एन अमेजिंग रेज्यूमे यू हैव, और maybe interviewer is somewhat engaging you longer than schedule। यानी कि अगर इंटरव्यू मान लीजिए 10 मिनट का 15 मिनट का होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही का इंटरव्यू ऐसा है जो खिंच गया है, इंटरव्यू का समय खत्म हो चुका है, फिर भी वो एंगेज है आपसे, अगेन दिस इज अ clear cut indication of he being interested in you and you will be selected। इसके अलावा ये भी आइडेंटिफाई कोशिश करने try to identify whether or not the interviewer is taking interest in what you are saying. Is he enjoying or not? Or is he getting bored? अगर आपको दिख रहा है कि इंटरव्यूअर बहुत मजे से आपकी बात सुन रहा है, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, वो आपसे बराबर आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है, आपसे बात करके उसे अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन। This is again an indication whereby he is telling you indirectly that yes, you are selected। इसके अलावा अगर कभी भी इंटरव्यू में आप बैठे हैं, आपको ये इंटरव्यूअर पूछता है कि आप कब तक यहाँ पे हैं, इफ यू आर एन आउट स्टेशन कैंडिडेट, आप कब तक जाएंगे, आप रिजल्ट का कब तक वेट करें, हम रिजल्ट फलाना दिन इस समय डिक्लेयर करेंगे, विल यू बी हियर टू सी योर रिजल्ट। अगर ये वर्चुअल इंटरव्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं। जी हाँ, ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इंटरव्यूअर आप में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो आपकी तरफ लीन होकर आपके सवालों कि जो भी आप जवाब दे रहे हैं उनको सुन रहा है, ये भी एक और इंडिकेटर है जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपका सिलेक्शन जहां तक है हो गया है। मान लीजिए आप इंटरव्यू खत्म हो गया है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको बहुत ही जल्दी थैंक यू ईमेल आ जाती है रिक्रूटर की तरफ से, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड बाय दिस डेट बाय दिस टाइम वी विल लेट यू नो द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब भी है कि हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया है। और हाँ, आप भी कुछ ऐसे सवाल इंटरव्यू में कर सकते हैं इंटरव्यूअर से, जिससे भी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि whether or not you will be selected। कैसे आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, और इस पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, that what do you think would be the ideal candidate for this respective job। जी हाँ, हम लोग बहुत बार सोचते हैं और इसी हेजिटेशन में रह जाते हैं कि अरे इंटरव्यूअर से हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं। जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आखिरी में इंटरव्यू खत्म हो जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, हम चले जाते हैं। हम सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर से, जहां हमें बहुत सारे सवालों के जवाब इंटरव्यू के अंदर ही मिल सकते हैं। वी आर क्लूलेस, वी डू नॉट नो हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस। Please, I request you, frame your questions in a way whereby you get the answers from the recruiters then and there. You need not to wait for so long, whereby at times I face certain questions, candidates, they approach me to have an answer that, ma'am, we have been waiting for the results for like a month or so. Results have not been declared yet. What shall we do? यही आंसर है कि आपको क्या करना चाहिए। ये सारे साइंस देखिए, ऑब्जर्व करिए, इंटरव्यू में रह के आपको काफी सारे जवाबों सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। और दूसरा, इंटरव्यूअर से पूछ लीजिए, रिक्रूटर से पूछिए
who would be the ideal candidate for this job? As you are in the system, you must be knowing who will be the ideal candidate. आपको रिक्रूटर बताएगा कि उनके हिसाब से इस जॉब के लिए आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। वो जो जितनी स्किल्स बताएगा, जो जो एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन बताएगा, अगर आपका सब कुछ उससे मैच होता है, जो जो आपने आज इंटरव्यू में उनको बोला, तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सेकेंड, जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले लास्ट में इंटरव्यू के, जब आपसे रिक्रूटर्स पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट से एवर नो, थैंक यू। सवाल पूछिए, ये तो जरूरी पूछना है, हु डू यू थिंक विल बी द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। और दूसरा सवाल भी पूछना है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विथ रिस्पेक्ट टू माई एक्सपीरियंस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, please ask me. I would love to help you share the information. Else, you can frame this question this way. Are you facing any challenges to understand my experience or education qualification? Please let me know. Recruiter से पूछिए सवालों में कि क्या आपको मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस समझ में नहीं आ रहा, कोई challenges हैं जिसकी वजह से आपको कुछ भी हेजिटेशन है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने बोला इंटरव्यू में आपको कहीं पे भी कुछ भी अगर क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझसे पूछ। ये दो सवाल अगर आपने पूछ लिए और उनके अच्छी तरीके से जवाब दे दिए, या आपको मिल गए रिक्रूटर्स, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव योर आंसर्स रेडी। और फिर आपको एक दो महीने भी इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको इतने सारे इंडिकेटर्स आज मैंने इस वेबिनार के थ्रू बता दिए हैं, जिसके थ्रू आपको ऑटोमेटिक विदाउट seeking anyone's help, you will get to know whether or not you have been selected for the respective जॉब अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा ध्यान रखिए इन सारी बातों का, बहुत काम आने वाली ये सारी की सारी बातें हैं जिनके थ्रू आप इंटरव्यूज बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। और हाँ, सबसे अहम बात, सैलरी एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास pertaining to that really. We did appear for an interview whereby I wanted to quote a higher amount. However, I never quoted so because I do not have a job right now, and I think that if I quote and if I argue, I don't know why we use argue. It is not argument. It is something to fight for your right. And please do not ever think that if you're a fresher, you cannot get a salary package which is more than an experienced candidate. ऐसा कुछ भी नहीं है फंडा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम फ्रेशर्स हैं, अरे हमें अभी तो शायद एक महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमने तो सिर्फ 6 महीने की इंटर्नशिप की है, सैलरी यहाँ पे 1 लाख है या 2 लाख है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों को 3-4 लाख मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल पाएगा, मैं इतनी सैलरी कोट कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। I've seen people, and this has happened with me as well. Again, a real life example whereby बहुत सारी इंडस्ट्रीज में starting of my career, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में अपीयर हुई हूँ जहाँ पे एज अ फ्रेशर अपीयर हुई, और मुझे एक्सपीरियंस लोगों से भी ज्यादा सैलरी ऑफर की गई। एग्जाम्पल where I can define this fact, the very fact whereby we are in a myth or in an illusion, जहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम तो फ्रेशर हैं, हमें एक्सपीरियंस लोगों से ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप प्रूव कर सकते हैं इंटरव्यू में, अगर इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन व्हाई नॉट। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि 10 to 30% हाइक ऑन योर पास्ट सैलरी ही मिलेगा, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। इट्स जस्ट दैट प्रिपेयर योर आंसर्स फॉर नेगोशिएशन फॉर सैलरी इन अ वे whereby you need to give a range to the interviewer or the recruiter या इंटरव्यूअर को एक रेंज दो। कभी भी एक फिक्स न्यूमेरिक फिगर मत दो कि हाँ मुझे 2 लाख चाहिए, हमेशा एक रेंज दो, मिनिमम टू मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो आप फिगर बताओगे वो उतनी होनी चाहिए कि अगर वो रिक्रूटर उसको थोड़ा नीचे भी लेके आए तो भी जितनी आप पाना चाहते थे उससे भी ज्यादा आके वो रुके। दिस इज हाउ वी नीड टू नेगोशिएट फॉर सैलरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू। एंड प्लीज रिमेंबर, बिफोर द इंटरव्यू और just before the interview starts, or in the first 5 to 10 minutes, maybe if for example, let's say your interview will last for like 30 minutes, please do not initiate talk with respect to salaries prior to the interviewer. Let him or her start with salary talk in the interview. जब तक इंटरव्यूअर या रिक्रूटर सैलरी नेगोशिएशन की बात करना शुरू ना करे, आपसे पूछे नहीं दैट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, तब तक आपको सैलरी के बारे में कोई भी बात नहीं छेड़नी है इंटरव्यू। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी बात छेड़ते हैं कि हाउ मच विल बी द सैलरी, इट पोर्ट्रेज, it gives a signal to the interviewer as if you're not that much interested in the job role. However, on the contrary,
You're more so interested in money. लेकिन हाँ, as and when you will be asked this question that how much salary are you expecting, share a range with the recruiter. और उस range को share करने से पहले you should know कि इस designation की क्या salary range या क्या salary चल रही है. And how would you get to know? There are so many sites, for example, Glassdoor, Fishbowl, so on and so forth. और अगर आप साइट पे नहीं भी जा सकते हो तो कोई भी आपका नोन है या अननोन है, स्ट्रेंजर है, लिंक्डइन पे उससे कनेक्ट बनाओ, उसको कनेक्ट उसमें रिक्वेस्ट भेजो और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनसे बातचीत करो और पूछो कि आप इस डेजिग्नेशन रोल में इंटरेस्टेड हो, उन्हीं की कंपनी में, जिस कंपनी में आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसी कंपनी का कोई भी शख्स ढूंढो जिस डेजिग्नेशन में आपको आप इंटरव्यू देने वाले हो, उसी डेजिग्नेशन का उनसे कनेक्ट बनाओ लिंक्डइन पे, उनसे पूछो कि उनको कितनी सैलरी मिलती है. ये सैलरी रेंज आप तभी बोल पाओगे इंटरव्यू में जब आपको पता होगा कि इस डेजिग्नेशन के लिए इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है. अगर आपने पहले से रिसर्च ही नहीं किया है सैलरी के बारे में तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा यू विल बी क्लूलेस, बिलीव मी. एंड अगेन एक और सवाल जिससे आई एंड अप, बहुत सारे सवाल आते हैं गैप ईयर्स को कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. इंटरव्यू हो रहा है, हमारा 1 साल का गैप है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम गैप ईयर के बारे में ऐसे बोलेंगे हम खाली बैठे थे एंड दिस एंड दैट, तो क्या होगा. जाहिर सी बात है, देखिए क्रॉस कल्चर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे देशों में गैप ईयर्स को पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरह समझा जाता है, लिया जाता है. It depends upon culture to culture. In our country, if I talk about specifically, if we have a gap year, it is considered to be, in a way, oh, all right, this person was not doing anything till the time you convince the interviewer or the recruiter that, see, this is how I have utilized the gap year. This is what I have done to be updated with industry trends. This is how I have brushed up my skills pertaining to industry standards, and hence I am a better fit in today's world. तो हमेशा याद रखिए, अगर आप गैप ले रहे हैं किसी भी प्रोफेशन करियर में, तो उस गैप को जस्टिफाई करने के आपके पास जवाब होने चाहिए. क्या आपने इंटर्नशिप की, क्या आपने वॉलंटियरशिप की, क्या किया आपने, क्या कोई कोर्स किया ऑनलाइन. सर्टिफिकेट अगर आपको मिले तो आपको वो एग्जाम्पल के साथ उन्हें बताना है, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट सो मेनी मंथ्स इन ऑर्डर टू बी अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड. क्योंकि अगर रिक्रूटर इंटरव्यूअर को नहीं पता चला कि आपने उस गैप ईयर में कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप इंडस्ट्री ट्रेंड से अपडेटेड रहें, तो यू विल नेवर एवर बी सिलेक्टेड. क्योंकि इंडस्ट्री जिस तरह से टाइम बदल रहा है, बैक टू बैक टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंडस्ट्रीज में बहुत बहुत चीजें, स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशन हो रही है, हर चीज बदल रही है. उसी तरीके से इंडस्ट्री भी बहुत ही फास्ट पेस से बदल रही है. और रिक्रूटर्स ये इस सवाल से जानना चाहते हैं, when they ask you what have you done when you taken a gap year, what have you done, अगर आपके पास उस सवाल के जवाब में बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा. लेकिन हाँ, अगर आपने उस समय में सच में कुछ किया है, अपडेटेड विथ द इंडस्ट्री ट्रेंड, तो आप बाजी मार सकते हैं, आपका आराम से इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा. यू कैन कन्वर्ट an interview to a successful job into. Hence, I will say good luck, all the best. These are some of the tips and tricks which I wanted to share beforehand in today's webinar. And I believe if you have any questions, I would love to answer them. Thank you. On the behalf of organizing committee, I had to express my hearty vote to thanks our excellent speaker Roli Verma. Ma'am, today we got opportunity to listen an interesting and thoughtful provoking discussion on successful job interview. The amount of expertise passion displayed by Roli Verma ma'am really enhanced our grasp of the subject. Roli Verma ma'am skillfully imparted her knowledge, leaving us with insightful conclusion and motivational concept. Her interesting presentation captured our attention and motivated us to learn more. We appreciate the effort they put into preparing this enlightening session. Ma'am, our viewers and participants have a few questions that they would answer. So, shall I proceed with the inquiries on their behalf with your consent? Yes, please.
All right. Well, I can see a question raised by Rimpa. Rimpa says, "Thank you, ma'am, for this wonderful session. My question to you is, what are some red flags to look for during the interview process?" Very, very, very good question, Rimpa. Well, Rimpa, as far as if I talk about a few red flags, first, please observe whether in the course of the interview, are you doing a monologue or a dialogue. If you are doing a monologue, which means just and just you are saying or you are talking, interviewer is not talking. It's one way. It is not considered to be an interaction. It means for sure we will not be selected in that respected interview. This is one of the red flags, whereby the candidate talks, and the interviewer never talks. It's one of the red flags. Second, if you see the recruiter or the interviewer clicking through pages of the diary or the notepad, वो पेजों को पलटने लगता है इंटरव्यूअर आपसे बात करते करते, which means he or she is not interested in what all you are saying. Third, red flag, body language, facial expression. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि interviewer is getting bored, he is looking here or there, not looking at you, not smiling, seems to be disinterested, it's a red flag. और सबसे बड़ा red flag तो मैंने आपको बता ही दिया है, मोनोलॉग. अगर सिर्फ और सिर्फ आप ही ने इंटरव्यू में बोला है, इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ आप गए, आपने लेक्चर दिया, स्पीच दी, वो एक मोनोलॉग हो गया, सिर्फ एक जना बोल रहा था, इंटरैक्शन हुआ ही नहीं, डायलॉग हुआ ही नहीं, दूसरे बंदे ने कुछ भी नहीं बोला. अगेन अ रेड फ्लैग. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज it's Prachi Khurana. She says, how important is researching the company before an interview and what specific information should candidates look for? Prachi, very good. I'm happy that you are asking so many questions. Prachi, it is very, very important to research company's vision, mission, and values before you appear in the interview. If you do not know company's vision, mission, and values, how are you going to justify in the interview that these are my skills, these are my education qualifications, this is what I have gained as an experience, and this is my strength? How will you justify in the interview that with the combination of all this is how I will participate in this very jobs, KRIs and KPIs to achieve company's mission and thereby vision. This is hence a very important and crucial step which will prepare you for the interview. If you do not know about the company's vision, mission, or values, you can never be prepared for the interview. I hope you got the answer. Then, how do you handle difficult or unexpected interview questions? Very good. This is by Manya Shahi. Right. Manya, first of all, here by come into picture your emotions. Be calm. Do not change the way of your body language once you've been asked an unexpected interview question by the interviewer. That is first tip. Do not ever change the way you are overreacting prior to this question being asked to you by the interviewer in the interview. Second tip, even if you have an unexpected question thrown at you during the course of the interview, there must be some linkages which you will find, common key points. Take those common key points being asked in that unexpected question and relate it with your education, your experience, your passion, your strength. And again, with an example, prove it to the interviewer that this is what I've done. Do this, tackle this, and this. This is how you can save yourself. And of course, read more about that specific job interview questions. और जो भी आपके Google search पे पहले 2-3 search results आते हैं, उनको prepare करके. All right, we have so many questions. Sushmita, I would suggest you to please take over and let me know, do we have time to answer other questions as well? Yes, ma'am. All right. Then we have during interview, fumble mumble happen. How to reduce it and cover up smartly? ये सवाल पूछा है अंजलि गुप्ता ने. अंजलि, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मतलब आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो. ट्रेनिंग, आप किसी भी जॉब में जाते हो तो सबसे पहले आपका एक टेम्पररी फेज होता है, उसको आप कंप्लीट करते हो, फिर आप परमानेंट होते हो किसी भी जॉब, किसी भी डेजिग्नेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की लेवल. इसी तरीके से इंटरव्यू के लिए भी आप अपने आप को ट्रेन करोगे. ट्रेन कैसे करोगे? प्रैक्टिस करके. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, काफी सारा इंटरव्यू के जितने भी सवाल हैं उनको सर्च करो. गूगल सर्च के पहले 2-3 जो भी सर्चेज हैं, आंसर्स पढ़ो, उनको अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस एजुकेशन के हिसाब से ट्वीक करके उनके जवाब बनाओ, उसमें कोई एग्जाम्पल इंटीग्रेट करो.
और ज्यादा से ज्यादा बोलो, प्रैक्टिस करो। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी टोन में कॉन्फिडेंस आ गया है, वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आप फुली प्रिपेयर्ड हो टू फेस द इंटरव्यू, और बस वहां आपकी प्रैक्टिस हो गई। और जहां आप प्रैक्टिस होते हो, मतलब आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन कर चुके हो, आप फंबल मंबल नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको नर्वसनेस हो रही है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस हर किसी को होती है, we all are humans, and it has been proved through psychological researchers that we all get nervous when so many eyes are staring at us. तो इस nervousness को हम कैसे हटा सकते हैं? Take a deep breath. Remember one instance from the past whereby you achieved success. If you can do this, then of course, nervousness will be gone in a minute. कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट तो पास्ट में आपके साथ हुआ है जहां आप सक्सेसफुल हुए थे, जहां आपने कुछ जीता था, उसको याद करो। Believe me, I challenge you. You will be elated to the core, whereby your nervousness will be gone. This is a very good strategy to be adopted. Thank you, ma'am. Thank you. No problem. Do we still have time to take more questions? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. If you want, you can, All if you right. have questions, you can address it, ma'am. Okay, okay. I'll take this question. This is from Kevin, I believe. Kevin Kurana. He says it was a wonderful session, ma'am. Thank you, Kevin. What soft skills are most valued by employers during the interview process? Kevin, very good question. And through this, I would like to answer a very, very specific question. These soft skills, which are very much valued by the interviewer, they are leadership skills, teamwork, communication skills, convincing skills, problem solving skills as well. These are top soft skills. How would you show this? The answer is through communication. If you know how to influence people, how to talk in perfect grammar, perfect sound, perfect tenses, prepositions, and if you carry that confidence in your body language, nothing like it. क्योंकि कृष्ण ने भी बहुत पहले गीता में ये बता दिया है कि कलयुग में भी सिर्फ वही लोग जीतेंगे और सक्सेसफुल होंगे अपनी जिंदगी में जो बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर आप बोलना ही नहीं जानते, डजेंट मैटर आपने बहुत कुछ किया हुआ है, आपकी एजुकेशन हार्वर्ड से है, आईआईटी से आप पढ़े हुए हैं, आपने कहीं से भी कुछ भी किया है, लेकिन अगर आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। Hence, brush up your communication skills. Speak, speak, speak. That is an ultimate soft skill which will take you far off. Thank you. Thank you so much for addressing this question, ma'am. Thank you so much, Kevin, for letting me and giving me the opportunity to ask. It's Thank you. pleasure, ma'am. That's it. I believe all questions have been addressed. Over to you, Sushma. So, I see a few people raise their hands. So, can I have Ghanshyam Das Gar, please? Can ask the question to ma'am. Good afternoon, madam. I'm Good GD Garg afternoon. from HL Lucknow. I had a very big time when I got about 4 5 companies offer and appeared in the various interviews. And some of my relatives have appeared for IAS also. They cleared the mains, but they failed in interview. Why people fail in interview? That's the question. Right, Ghanshyam. Again, see, we say that if we have a lot of education with us in our kitty, if we have had a lot of experience, we have worked in so many companies, or maybe we are a pass out of this premier institute or this premier college, if we know each and every answer. However, if we do not practice how to express it, अगर हम बोलना ही नहीं जानते हैं, अगर हम किसी को समझा ही नहीं पाते हैं अपनी निजी जिंदगी में भी, घनश्याम जी, मैं यही बोलूंगी, जो लोग अच्छा नहीं बोल पाते हैं, and it is applicable, this is one of the principles which is applicable in our family, in our in our daily lives as well. हम खुद ही जज कर लेंगे अगर हम किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार हमारे किसी से झगड़े हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम अपना पॉइंट रख ही नहीं पाते हैं। और जब तक हम अपना पॉइंट रखते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, या तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फादर मदर रिलेटिव्स हमको गलत समझ लेते हैं, और ये अक्सर हो रहा है हमारे साथ। तो इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर्स व्हिच विल टेल यू दैट वी आर नॉट गुड स्पीकर्स बिकॉज इट इज रिकरिंग इन आवर लाइफ। तो वहीं से आप एक सिग्नल आपको मिल जाना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलना शुरू कर दो जब इंटरव्यू होने से पहले, क्योंकि आईएएस में ठीक है रिटन में आपने कर लिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरव्यू में क्यों रह जाते हैं? देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड। इयर्स अगो, एजेस अगो, हम ह्यूमंस का प्रिडेशन होता था, हमें हंट किया जाता था, और हंट करते हुए जब भी कोई ट्राइब हमें हंट करती थी तो क्या होता था? हमारी आंखों में देखा जाता था
तो वो जो एक फियर है कि बहुत सारी आंखें हमें घूर रही हैं, अरे मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो डर जाऊंगा, आई एम अनेबल टू ओवरकम दैट फियर of so many eyes gazing at me during the course of the interview. This has got settled in our brain. There's a part in our brain which is known as amygdalus, जहाँ पे ये सारे past impressions हमारे सोल के बहुत सारे सालों से सेटल्ड है इन अ पैसिव फॉर्म। और जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू के बारे में, ज्यादा सोच लेते हैं, हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं है, प्रैक्टिस इतनी नहीं है, हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, बोल बोल के तैयारी नहीं की, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्रेन योर माइंड इन अ वे द वे यू वांट टू। तो क्या होता है, हम इतना ज्यादा नर्वस होके जो पास्ट इंप्रेशन है हमारी पुरानी लाइफ की, हमारी सोल की, हमारे ब्रेन में डीप सीटेड, हम उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही इंटरव्यू प्रोसेस में भी है, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स की आंखें, पैनलिस्ट की आंखें हमें घूरती हैं, व्हेन दे स्टार्ट गेजिंग एट अस वी स्टार्ट फीलिंग नर्वस। हमने क्योंकि ट्रिगर पॉइंट तो अपने एमआई विटनेस को दे दिया है कि याद करो वो पुराना जमाना जब आप किसी और ह्यूमन फॉर्म में थे, बॉडी में थे, यही आत्मा, बिकॉज we believe in reincarnation, soul never Yeah. dies, right? So this Yes. what happened, this is something, a scientific reason behind why we get nervous. And believe me, people who know how to manage their emotions well, you need to think about something else. And what else can you think when you're getting nervous? Think about the past incident whereby you were so happy when you won that thing in your life. Think about that success. How were you feeling then when you achieved it? Feel it. And once you start remembering that incident of your past life where you won or you achieved something, you will be elated. And once you're elated, your nervousness will be gone. And doesn't matter how many million eyes are gazing at you, you will definitely succeed and you will be able to manage your nervousness. This is a pro tip. Right, madam. Right. Follow it. Good luck. Yeah. Thank you, madam. Thank you. Thank you. My honor. I express my gratitude thanks to Roli Verma ma'am for sparing time for her hesitating schedule to impart information to us. We are speechless by your invaluable presence at the session. You provide in-depth analysis of the subject and shared some fascinating information. We shall bide our time for the further such event in order to advance both our personal and collective knowledge. Additionally, I want to thank you everyone in attentive audience for their smart question and active involvement. This event is considerably more meaningful because of your participation.